Namaskar, good evening. Welcome to everyone present here tonight. Uh, tonight's episode is a bit special because अभी फिलहाल हाल फिल में जो एक कंट्रोवर्सी हुआ था, somebody dug out a piece of paper, a document from the National Archives, which showed that Gandhiji was allocated rupees 100 for his prison allowances. तो वैसे तो ये काफी हार्मलेस डॉक्यूमेंट है, इसमें इतना बुरा मानने की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रिजनर्स को पैसा मिलते थे. बट द कांग्रेस इकोसिस्टम, द कांग्रेस पॉलिटिशियंस, देयर स्पॉन्सर्ड हिस्टोरियंस एंड देयर एक्टिविस्ट्स टुक इट टू देयर हार्ट, बहुत बुरा मान गए और पीछे पड़ गए. दे अगेन लिंक्ड इट टू सावरकर फॉर सम ऑड रीजन. फॉर एवरीथिंग फॉर देम टेंड्स टू गो बैक टू सावरकर. अब अच्छा, इस मुद्दे पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो भी आज है यहाँ पे आप लोगों में, कि द टॉपिक टुनाइट इज अबाउट द फैक्चुअल हिस्ट्री, द करेक्टनेस ऑफ हिस्ट्री. It is not supporting or against Savarkar. This is not a discussion whether you might agree with Savarkar, you might disagree with him, but the topic is not that. The topic of discussion is not Savarkar. The topic is how history has been distorted. इतिहास को किस तरह से दबाया गया है, किस तरह से डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट किया गया है, और आज भी ये चलता आ रहा है. तो आगे जो हुआ, ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद जो हुआ, उसके लिए उसके बारे में हम बात करेंगे. दो बहुत स्पेशल गेस्ट्स हैं हमारे साथ आज शाम को. बट बिफोर आई गो देयर, अनदर अनाउंसमेंट, आई वुड लाइक टू मेक अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स. एक तो है Nisha Netaji, we have started a Telegram group. So I would like you to join that group if you interested in the campaign that we do, in the work that we do. मैं कमेंट सेक्शन में ये पोस्ट कर रहा हूँ लिंक उसका. अगर आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. और दूसरा जो है, हर सेशन में ही मैं बोलता रहता हूँ कि अभी जो सिचुएशन है, जो कैंपेन है, जो हम नेताजी के डिसअपीयरेंस मिस्ट्री को लेके कैंपेन चला रहे हैं इतने सालों से. अभी जो मेरा जो किताब आया, नेताजी के बायोग्राफी जो आया, तो इस सारे मुद्दे को अगर आप एक साथ देखेंगे तो देखेंगे कि आपको पता चलेगा, आपको साफ हो जाएगा आपके पास कि किस तरह से हिस्ट्री को, जैसे मैंने कहा, कि दबाया गया है, सप्रेस किया गया है, डिस्टॉर्ट किया गया है. ये कैंपेन हमें आखिर तक अगर ले जाना है तो वी नीड योर सपोर्ट. एंड नथिंग हैपेंस फॉर, आई मीन, विदाउट रिसोर्सेज. वी कैन नॉट सस्टेन अ कैंपेन विदाउट रिसोर्सेज. तो आपकी सपोर्ट की तो बहुत जरूरत है. जैसे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं देता हूँ कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, अलग वीडियो भी है. एंड this is completely voluntary, and as you will see, a lot of organizations, particularly news organizations, which work directly with their subscribers, they are also following this model. And isko chhod ke aur koi chara nahi. There is no other way. We need your support, we need your help in building up resources to take the campaign forward. तो ये details दिया गया है, मैंने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. If you wish, if you feel like you can contribute. This is completely voluntary. Again, as I say, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको डिटेल्स. तो ये है. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक टुनाइट. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम संपत. Vikram, a very warm welcome. Thank you for joining. Thank you, And Chandra. of course, Anuj is there. And so Vikram, the whole drama started when you retweeted a document, I will taken out from the National Archives online version, which showed that rupees 100 was being sanctioned per month for Gandhiji during his imprisonment. तो इसके साथ इमीडिएटली इसका रिपरकशन रिएक्शन जो शुरू हुआ, द लिंक वाज टेकन बैक टू अगेन टू सावरकर, एज इफ जो कुछ भी हो, किसी के बारे में कुछ भी बोलो, उसको घुमा के सावरकर के पास ले जाना है. तो बिफोर वी गो इनटू द दिस सैंक्शन ऑफ 100 rupees for Gandhiji and other leaders, we will come to those details.
बट बिफोर दैट ये जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और उनके साथ साथ बीजे यात्रा से निकले हुए जो इतिहासकार हैं, वो भी बोलने लगे कि सावरकर को पैसा मिलता था। सावरकर वाज एक्चुअली अ पेड ब्रिटिश एजेंट, उनको स्टाइपेंड मिलता था ब्रिटिश से। तो आई मीन लेट अस एड्रेस द इशू डायरेक्टली। ओवर टू Yeah. यू, आपको क्या कहना है इसके बारे में, क्या बोलना है? Yeah. Thank you, Chandrachud, and great to be with you and Anuj as always. I remember last time हमारी गपशप it went on almost till 12 in the night, and I think काफी लोग जुड़े थे तब तक. हाँ, तो इस this incident was quite quite surprising for me because there was no insinuation in what I shared. It was just, and that was not one page. Actually, many people just read that one page. अगर उन्होंने वो लिंक खोल के देखा होता तो वो एग्जैक्टली 60 पन्नों का एक बड़ा फाइल था नेशनल आर्काइव्स का, जिसमें पूरा पूरा द लेटर करस्पॉन्डेंसेस आर देयर एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसमें पहले तो लिखा गया, सब लोग पहले तो बोल रहे थे कि ये अलाउंस जो है गांधी जी को जाता ही नहीं है, इट्स नॉट अ पर्सनल अलाउंस टू हिम, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस। तो पहले तो ये बोला गया, you read properly, you need to learn English, वो सारी चीजें, the usual ad hominem attacks that go on, that went on. Then somebody pulled out some letter which Gandhiji had written in May 1930 to Major Doyle or somebody, and where he's supposed to be saying, I am refusing this money, which is not true. I'll elaborate on Right. that. So if the money is not allocated to him, why is he refusing it? And what power does Gandhiji have to refuse a debit and credit between government of India and government of Bombay? अगर इतना पावर होता कि सरकारी खजाने में क्या आता है जाता है वो ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो that raises other kind of questions, right? So it is very clearly a question that it is a monthly allowance, and इसमें बुरा, जैसा आपने कहा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? It's not as if someone is giving money or immediately that person is a sold out agent, या इससे ये पता चलता है कि गांधी जी was a sold agent of the British. ऐसा किसी ने नहीं बोला. It is just a fact to bring to light that there were almost all prisoners, जहाँ पे the regulation 3 of 1818 which came about first in the Bengal presidency, और उसके बाद कई और प्रेसिडेंसीज में भी ये शुरू हुआ था, like Bombay Regulations 25 of 1827. This was in force in several British presidencies, and it only dealt with the issue of preventive detention, either in prison or in restricted detention in house arrest or whatever, where your liberties are being curtailed. तो ऐसे हालात में जब आपके जो the freedom of moving around, freedom of employment, all that is being restricted, टू एंश्योर कि आपका परिवार चले, आपका जो है खानदान बिना किसी प्रॉब्लम के जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिविंग अलाउंसेस टू ऑल प्रिजनर्स, एंड दे वर कॉल्ड स्टेट प्रिजनर्स, whether they were in jail or they were in detention. On the similar lines, so the idea was to bring to light the fact that this whole issue of allowances, which were given either as a lump sum allowance to somebody, or there were various categories to arrive at that quantum. There was no fixed amount कि किस राजबंदी को कितना आप जो है allowance देंगे, तो उसका कैलकुलेशन हर एक के लिए अलग अलग होता था. व्हाट वाज द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, उनका फैमिली कितना बड़ा था, कितने बच्चे थे, ऑल दोज थिंग्स, उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी था या नहीं था, क्या वो जब्त किया गया था, उसके हिसाब से कितना मुआवजा उनके लिए कैलकुलेट किया जाना चाहिए, क्लोथ्स के लिए कितना, खाने पे कितना है पर पर्सन, ये सारे जो गणित है करके सरकार एक amount sanction करती थी, and that is what would go even for Gandhi ji in 1930 when the civil disobedience movement was going. उनको 100 रुपए प्रति माह allowance देने की बात हुई थी. Now that letter where it is alleged that he refused it, अब आप कौन अंग्रेजी समझे वो देखना.
एक चीज आप देखिए उसमें, he in the letter he says there are certain special privileges being offered to me by the government. Books and newspapers I do not want through this government. Newspapers of I would send for these if permitted, कुछ Bombay Chronicle, Times of India वगैरह वगैरह. The government have suggested rupees 100 as monthly allowance. I hope I shall need nothing near it. वो बोलते हैं आई होप आई शैल नीड नथिंग नियर इट. उतना ज्यादा Yeah. मुझे चाहिए ऐसा मुझे आई होप ऐसी नौबत नहीं आए. आई नो दैट माई फूड इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर. इट ग्रीव्स मी बट इट हैज बिकम अ फिजिकल नेसेसिटी विथ मी. मेरा जो खाने के अरेंजमेंट्स हैं वो काफी कॉस्टली है. इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि इतना मुझे मुझ पे व्यय करने की जरूरत ना पड़े. ये मेरे लिए एक फिजिकल नेसेसिटी बन गई है जिसका मुझे बहुत दुख है. इसमें कहाँ पे ये लिखा गया है कि ही इज रिफ्यूजिंग द प्रिविलेजेस. ही डजंट वांट द बुक्स एंड द न्यूज़पेपर्स बट अबाउट द मनी ही सेज उतना नहीं बट व्हाटएवर लेट अस होप दैट इट डजंट कम अप टू 100, मे बी 70, 80, 90 कहीं भी आए. आई नो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड आई ईट इट बिकम्स वेरी कॉस्टली और उसका मुझे दुख है पर क्या करें, ये दिस इज माय मजबूरी. I hope the government understands. That is the sum and substance of this letter, which is thrown around as if अरे उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया. अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होता, ये लेटर जो है टू Major Doyle, it is dated May 10th, 1930. Now the letter that I shared was dated June 1930. And subsequently June, July 1930 में the correspondences are going on between government of Bombay and government of Delhi, government of India. So by then if it had come on record that the prisoner MK Gandhi has refused the allowance, that would have been on the government record and there would be no further discussion on that. The discussions are continuing कि आप इनको कितना पैसा आपको देना है and what happened if you actually read through those 62 pages जिसका किसी को पेशेंस नहीं है. उसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे went overboard and announced, because he was jailed in Yerwada, which came under the Bombay government's jurisdiction. They went ahead and made the announcement कि हम 100 रुपए प्रति माह उनको मुआवजा देंगे. उसके बाद उन्होंने कहा कि this all this comes under central government का एक budgetary head. So and we don't have the money for this. It will take the letters actually say एक साल का अगर आप देखें तो 10,000 रुपए तक इसके लिए खर्च हमें उठाना पड़ेगा. इतना पैसा हमारे पास नहीं है. Moreover, this is a central subject. तो इसलिए whatever we spend, we will take a reimbursement from you later on. So this is just a bureaucratic conversation between these two कि पैसा आप देंगे या हम देंगे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार. तो अगर तब तक the prisoner has said I don't even want the money, तो ये दोनों सरकार क्या पागल हैं कि बैठ के इसके बारे में इतनी चर्चाएं करेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन से हेड से इसको रिएम्बर्समेंट मिलेगा. तो this that is a point where I have a question, Vikram. It is common sense. ये जो मेजर डॉयल को लिखा हुआ जो चिट्ठी है वो 1930 का है. अगर 1930 में गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया अलाउंस लेना, तो 1932 में विदाउट डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम दैट द प्रिजनर हैज रिफ्यूज्ड, एज यू सेड कि द प्रिजनर हैज रिफ्यूज्ड टू टेक द अलाउंस, 1932 में फिर से सैंक्शन कर रहे हैं 100 रुपए. एंड इससे भी बड़ी बात यह है, which while going through some files of 1943-44 vintage about security prisoners, जब आगा खान पैलेस में गांधी जी imprisoned है, अगर 100 रुपए इन लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है कि गांधी जी के स्टेटस के खिलाफ है and it goes against his saintly image, then they are in for a shock, because in 1943 the allowance was increased to, believe it or not, rupees 450 rupees. In the next year, the allowance was increased by a further rupees 100 to rupees 550. तो 550. I mean, does it even stand logic कि जो prisoner ने refuse कर दिया पैसा लेने से, allowance लेने से, उनका 100 रुपए तो छोड़िए, उस 100 रुपए को increase करके 550 रुपए तक ले जा रहे हैं. तो how, तो ये किस तरह का डिस्टॉर्शन है? छोटा सा सवाल आप दोनों से. गांधी जी ने कभी इनको जब रखा था आगा खां पैलेस के अंदर,
गांधी जी ने कभी रिफ्यूज किया कि मुझे पैलेस में मत रखो, मुझे जेल में रखो? कहीं आपने कुछ डॉक्यूमेंट देखा? Not that I know of. I've never heard of पैलेस it. में रखना, पैलेस में रखा, पूरा उनका एंटूज उनके साथ में था, उनकी हाँ, बिल्कुल कस्तूरबा गांधी वहाँ थी, महादेव देसाई की वहाँ डेथ हुई है, कस्तूरबा भी वहाँ मरी है, और वो बच्ची भी वहाँ पे थी। तो कभी उन्होंने क्या रिफ्यूज किया कि मुझे आप पैलेस में मत रखो? बाकी सब लोग को तो उन्होंने जेलों में रखा, मारा पीटा, टॉर्चर किया। इनफैक्ट बहुत डिमांड उठी थी उसके बाद में कि जिन लोगों ने, इनफैक्ट गांधी ने भी मेंशन किया और डिस्क्राइब किया कि टॉर्चर कैसे ये लोग करा करते थे। इन्होंने बहुत उनको मारा पीटा। टॉर्चर अनुज, टॉर्चर तो बहुत बड़ी बात हुई है। ये जो सिक्योरिटी प्रिजनर्स को, स्टेट प्रिजनर्स को और डेटेन्यूज को जो अलाउंस मिलना था, ये सबको नहीं मिलता था, जबकि उनको मिलना चाहिए था। बाय लॉ दे वर एंटाइटल्ड टू इट, वेरी फ्यू एक्चुअली गॉट इट। I don't know, I have never come across, I will be happy if somebody points it out to me. I have never come across any discussion or appeal by Gandhiji to ensure that this allowance is given to all state prisoners. This was done by Subhas Bose when he was exiled to Europe. One of the first things he did when he reached Europe in 1933, उस टाइम पे हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुत हल्ला चल रहा था. द गवर्नमेंट वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर giving these kind of allowances, that the government is spending so much money on security prisoners. So Subhas Bose wrote a lengthy letter giving all the details to the Manchester Guardian newspaper. And there he gave the statistics that 1,500 prisoners, state prisoners, were there at that moment in Bengal only. And out of that, only a handful were getting the money that they were entitled to under the law. And a vast majority were not given that money. So he raised his voice for all those state prisoners. I have not come across anything similar in Gandhiji's writings. If some Gandhi expert can point it out to me, I would be very grateful. But I haven't come across anything. So torture तो आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल स्टेट प्रिजनर्स, डेटेन्यूज को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था. मेरा And कहने का Subhas मतलब Bose है raised कि his voice. टॉर्चर बहुत लोगों को किया था उन्होंने, इवन कांग्रेस के लोगों को. तो वो डिमांड हुई थी, उन्होंने बीच में कहा भी था कि हम लोग इनको बाद में इनको इन पे कुछ मुकदमा चलाएंगे. कुछ नहीं हुआ. तो क्या गांधी जी ने कभी रिफ्यूज किया कि जब बाकी लोगों को आप ऐसा रख रहे हो, आप किसी को आगरा फोर्ट में रखा, किसी को लाहौर फोर्ट में जेपी को तो 21 दिन तक सोने नहीं दिया लोगों ने, मतलब सोना, डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप एक्चुअली फॉर 21 days. Did Gandhiji ever say that I also want parity if my people are been kept in, let's say, Lahore Fort or other forts? All you have to do is to read the statements of the Collective- prisoners in Lahore jail, Lahore Fort, and all those places. They were tortured day and night, as you say, that they were deprived of sleep. They were beaten up, not given food. So, जैसे one of Subhas Bose's nephews became Yes. physically handicapped because of the torture. टॉर्चर तो, किया उन्होंने. जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि मैं जिस सेल वहाँ पे रहा था, वहाँ पे वो टॉयलेट भी वहीं करना है, कोई पानी वानी नहीं था वहाँ पे, कुछ करके गंदा टट्टा वहीं टट्टी पेशाब कीजिए वहीं पर, आप सेल में वहीं पे, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, और मोटे मोटे चूहे वहाँ पे घूम रहे हैं. और वो एक अमीर घर का लड़का था, और वो वहाँ जाके उसको ऐसी जगह उसको रहना पड़ा. ऊपर से मारपीट हुई है, जो उसका उनका मैं यहाँ का हैमस्ट्रिंग या कोई मसल जो उसका तोड़ दिया, जिंदगी भर चलने के लायक था. जेपी को टॉर्चर हुआ, बहुत कांग्रेस के लोगों को टॉर्चर किया, डंडा वंडा लिया उन्होंने, पीछे डाला, ये क्या वो क्या, ऐसे बहुत टॉर्चर आपको उस टाइम पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. All I want to know whether Gandhiji ever said कि look, I should not be given special treatment. Why are you keeping me in Aga Khan Palace? Keep me in the jail with my own people. So if it maybe एक आप तो ये है, दूसरा ये था कि this allocation, this allowance was also arbitrary. It was decided by the government, as Vikram explained, depending on the income of the person who has been put in prison. उनका कितना लॉस हो रहा है इनकम, उनका फैमिली में डिपेंडेंस है, उसके लिए कितना देना चाहिए. तो दैट इज अगेन अनदर थिंग विच सुभाष बोस पॉइंटेड आउट इन हिज लेटर टू द मैनचेस्टर गार्डियन, that I never got a family allowance, although I have a lot of dependents, lot of people who are depending on me. And moreover, when I was put in prison in 1924, I was the chief executive officer of the Calcutta Corporation. And I was drawing a decent salary. तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिला for the loss of that kind of income. तो ये 1932 में जब गांधी जी को और सरदार पटेल को 100 रुपए पर महीना मिल रहा है, वहीं पे सुभाष बोस को मिल रहा है ₹38 पर मंथ.
तो ये डिस्पैरिटी भी था, ये सबको सेम अमाउंट मिलता था ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स यूज्ड टू गेट, people who didn't get family allowance, their monthly allowance was like 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees, 40 rupees, इस स्केल में मिल रहा था. तो compared to that scale, what Gandhiji was getting was definitely much higher. So ये disparity भी था. And लेकिन ये गलत है ना increase इस तरह की होके, भाषा सावरकर के लिए यूज करना ही, जिसमें कि मुझे उस बात से बहुत नाराजगी है. अच्छा, सारे मजे लोग की बात ये है कि some Congress party supporters, some journalists, there is no dearth of these intellectuals, especially after the BJ Yatra, is somebody posted a photo saying that so many thousand crores have been spent on Modi's foreign travels. Does that mean that Modi has been given the money? I mean, what kind of comparison is that? Modi is the prime minister of a free country. It's budgetary allocation of a free country. I mean, is comparing the prime minister with a state prisoner in a colonial government, and then one person does this kind of comparison, another person says no, गांधी जी को पैसा नहीं मिलता था, वो वापस दे दिया था, लौटा दिया था. तीसरा बंदे ने बोला कि गांधी जी को मिला तो क्या हुआ, सावरकर को, गांधी जी को सिर्फ अलाउंस मिलता था, सावरकर को मिलता था स्टाइपेंड. विक्रम, आई वुड लाइक यू टू एड्रेस दिस, कि स्टाइपेंड वाला चक्कर क्या है? पेंशन था, स्टाइपेंड था, इट इज पेंशन स्टाइपेंड नहीं, हाँ. अलाउंस ही था ये. अलाउंस लाइक एक चंद्रचूड़ आपको मैंने भेजा था कि देयर वाज वन लेटर डेटेड, आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन, दैट इज अ बाद प्रॉब्लम. में आप डाल सकते हैं, मैं भी अपने ट्विटर I पे. will. 8 September 1924. This is again between the Home Secretary of Government of India and Government of Bengal, जहाँ पे there is this revolutionary Upendranath Banerjee. So he was also released from jail and he was kept in house arrest. He was kept under detention, very similar to what Savarkar was kept in Ratnagiri. तो उनके बारे में भी there is this whole discussion saying, you know, अभी उनका total we had kept it to about 100 rupees per month in 1923. Now the family has increased. He has got one more child. So obviously he was staying at home with his wife at that time. तो एक और बच्चा उनको हो गया है, तो इसलिए खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं. तो हमें उनका 100 रुपए प्रति माह से 145 per month we need to increase. तो ऐसा कुछ correspondence है about Upendranath Banerjee. So it is, as I said earlier, कि या तो you are put in jail या you are under preventive custody, you are under house arrest, जहां आपका जो है your this is नहीं, ये दूसरा वाला एक और, ये भूपति मजूमदार, इसका भी अगर आप देखें, this is also rupees 145 increased by rupees 100 to rupees 145. हाँ, this is 1924. yes. दूसरा जो Okay. चिट्ठी है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये उपेंद्रनाथ जी के बारे में है डिस्कशन. On further receipt, himself and his wife, the question of his family allowances was examined. Inquiries were made. This one. This is The Upendranath Banerjee. son has been admitted. His wife has given birth to third child. We have to spend money on medical treatment. So this, that. So essay. This is, so obviously he was staying with his family at that time. So it was not necessarily for just people who were in jail, but also those who had curbs on their freedom, either to earn anything or to move about and carry on employment. उनके लिए कुछ allowance was to be given. So when it came to Savarkar, as you know, he was released from cellular jail and from the prisons in India in 1924, and there were those two conditions put कि 5 साल आप राजनीति में कोई भाग नहीं लेंगे और फिर you are going to be नजरबंद करके आपको रखेंगे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में. उसके बाहर अगर आपको कहीं जाना है तो गवर्नमेंट के परमिशन से ही आप जा सकते हैं. और तब तक उनके सारे जो डिग्रीज थे वो छीन लिए गए उनसे. He had done a barrister's degree in law from London. That was taken away from him. His graduation degree from Ferguson College in Pune, that had been taken. So on paper, he was just a metric pass. तो आय के कोई साधन नहीं थे. वो कृत्रिम रूप से अगर कोई जर्नलिस्टिक काम अगर वो करते anonymously, तो that was all the time under surveillance.
all his books would be scanned कि ये क्या लिख रहे हैं, क्या नाटक लिख रहे हैं, क्या लेख लिख रहे हैं, हर चीज को देख देख के there were lots of inquiries sent कि this is anti against the government, this is causing tension between Hindus and Muslims, तो इसके बारे में आप show cause notice were sent to him. And in fact in 1925, 1 year after he gets released, he writes on 25th of January 1925 to the Bombay High Court saying, I'm a bona fide lawyer. I have trained as a lawyer. So can I practice law as an advocate in the High Court in the capacity of a barrister? And 3 months later, in April 1925, he received a terse response from the Bombay High Court that the lordships have rejected your petition. So obviously there No was reason was given. no reason given at all. So he was not allowed to practice. He had no degrees, so he could not get a decent job. He could not work anyway because the government had restrictions. In such a scenario, how does a person, जैसे उपेंद्र नाथ जी के तीसरा बच्चा हो गया है तो उसके लिए ज्यादा पैसा अगर देना है, तो Savarkar family was also growing by then. His wife was there, his younger brother was the only earning member, Narayan Rao, who had a small clinic, and he also had a wife. So it was a large family. एक आदमी के आमदनी से it could not survive. तो ऐसे में he wrote these letters in 1924-25 to the government saying बंगाल के प्रिजनर्स को उसी टाइम पे जो उनके समकालीन जो सेलुलर जेल में बंद थे उनको somewhere between 100 to 120 130 rupees per month they were getting allowances for similar reasons. उनके भी restrictions on working, restrictions on movement, तो उनको इतने मिल रहे हैं. तो I also need something for the sustenance of my family because I have no other sources of livelihood. तो इस 1924 में जब ये भेजा गया, that was rejected continuously, and it was in 1929 पहले जब उनका 5 साल का condition, the first condition lapsed, and it came for a review. And when it came for a review, the government said, we cannot trust this man because he is linked with the underground revolutionary movement, so we will extend the detention for another 2 years. So जब extension happened, that was when they began to consider, acha, we are now extending his detention, so he becomes a state prisoner in that capacity. So, and he's been asking, and we've been giving it to other people right from 1920s to Bengal revolutionaries and others. तो इसको क्या हमें देना चाहिए? And there's a lot of letter correspondences between the district magistrates of Ratnagiri and Nasik and the police commissioner of Bombay and the government of Bombay. So there was a report that was sought from the DMs of Ratnagiri and Nashik and the police commissioner to say, can you give an estimate of how much is his family expenses? What's his socio-economic background? Because though they came from a zamindari ancestry, when he and his elder brother were incarcerated in cellular jail, his entire property, including the utensils in the house, were taken away by the government. They had nothing. And when the two brothers were away in jail, their respective wives literally were begging on the streets to earn a living, and most of the society had excommunicated them, saying ये तो criminals की बीबियां हैं. So at such a time, so they said, give an estimate ki what are the monthly expenses. So the DM of Ratnagiri then said, considering उनका भी परिवार जो है बढ़ रहा है, they had children by then, so it is good to put it at 150 rupees per month. So then the Home Secretary of Bombay reduced that further to from 150 to half, to 75 rupees per month. Finally, when that letter goes to the governor of Bombay, he reduced 75 further to 60 rupees per month, and this started being given to Savarkar from 1st of August 1929, when the extension of the detention continued. And it didn't go on for the rest of the British Raj. It was only till the time he was released from that preventive detention, which is 10th of May 1937. So about 8 years was what this allowance per month was being given to him, only because, and that too. So out of 13 years that he spent in Ratnagiri, only 8 years of that he got 60 rupees per month, whereas some of his contemporaries were getting in Bengal 100, 120, 130 rupees per month. So as we discussed earlier, this was a very arbitrary way of fixing
किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये सारी चीजें इसका कोई फॉर्मूला, फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं था. इट वाज लेफ्ट टू द whims and fancies of district magistrate, police, government officials, bureaucracy, and all of that. I think the larger picture, I think what we need to convey is that taking allowances did not make anybody a traitor, or not taking allowance made anyone a great patriot. It was. No, but I would make a differentiation here, Vikram, and I think that's a very crucial point. Ji. And I have been trying to make this point for a very long time, that our politics, in our current politics also, we have imbibed the Gandhian language of politics. And Gandhian language of politics, I mean that you say something, you mean something, and you do something else. I'm sorry. I mean, it gives a blow to the Mahatma image, and a lot of people will be offended. But I can't arrive at a different conclusion if I look at various examples. And here is a good example. The letter to Doyle is wrapped in a very pious language and intent. It almost looks like he does not want to live on taxpayers' money, which he says. But then he goes on to live on that, which is fine, which is not wrong. But to show one intent and do something different is something, typical politician would do, and we have got used to it today. Perhaps we cannot reconcile a Mahatma being the same as today's politician, is what is creating this dissonance amongst his Gandhi's followers. More than Gandhi's followers, I think Rahul Gandhi's followers are more offended than Gandhi's own followers. So uh, that thing, and it goes on to increase to 550 rupees. So what happens to the pious intent of 1930? How does Gandhiji allow the government to allocate almost 5 times, more than 5 times more money? So there is a difference between the intent and actual activity, at least in case of Savarkar. And in case of the other revolutionaries or state prisoners or detainees who used to get and haggle for increasing the family allowance, because whatever they used to get was not sufficient, whereas their allowance was supposed to be determined on the basis of their need, not only need, but their actual position in social life, the socioeconomic situation, how much they used to earn. And because of imprisonment, without trial, without any charge sheet, what was their economic loss? All these were factors. I very much would like to know what was Gandhiji's economic loss, when it was, how it was calculated, when that rupees 100 was ascertained for him, whereas rupees 38 was ascertained for Subhas Bose, and rupees 60 was ascertained for Savarkar. A couple of people in Bengal used to get very high level of allowances because they were very high earning people. Two of them were Netaji's elder brother Sarath Chandra Bose, and the other was another barrister, Jatindra Mohan Sen-Gupta, who was a top Congress leader. So because of their socioeconomic status, the government used to pay them a larger amount of money. What was, Gandhiji's income, based on which a higher amount was allocated for him, and compared to people like Subhas Bose? And I shared actually the whole list of prisoners in 1932 for which allocations were made, and most of them who were not getting family allowances were getting in the range of 20, 40, 30 rupees, not 100 rupees. So there's a discrepancy there, and the और भी problem करना is, पड़ेगा इसको, एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ये देख, जैसे मैं नेताजी का देख रहा हूँ, यरवड़ा जेल में उनको क्या क्या फैसिलिटी उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज दी है, बेड, कम्बोर्ड, पिलो, वाटर जग, ये उन्होंने अपने पैसे से खरीदा था, अपने पैसे से अच्छा खरीदा था। ठीक है, मॉस्किटो नेट, ये सब ये उनको दिया है। मेरे ख्याल से आगा खां पैलेस में जो उनको मिला है पूरा, उसका भी तो एक खर्चा होता है ना। आप इतने बड़े पैलेस में रहेंगे, अगर आपको एक बड़ा हॉल दिया है रहने को, उसमें आपको, मैंने उसकी फोटोग्राफ्स देखी हैं, वो भी तो गवर्नमेंट ने पैसा इनकर किया था उनके ऊपर। उसको कंपेयर कीजिए कि सावरकर को कैसे रखा गया था, इन्हें यहाँ पे उन पे कितना पैसा खर्च किया, बिकॉज आगा खां पैलेस को मेंटेन करने का पैसा चाहिए ना। Anuj ji, I think that is a different issue ना। I mean, maintenance of the prison or facilities अलग चीज है। ये
पर्सनल मेंटेनेंस फॉर फूड एंड क्लोथ्स एंड बट वो आपने चॉइस है ना कि आपने उनको वहां रखा है। मुझे ये बताइए ना कितने और प्रिजनर्स को पैलेस में रखा गया था, क्योंकि ये लोग इतनी घटिया हरकतों पे उतर आए हैं कि ऐसे से कंपेयर करें किसी ने आपके लिए इतना जबरदस्त सहा हुआ, आप उससे एग्री नहीं करते, आप इसने की बट देयर इज अनदर घटिया एस्पेक्ट अनुज, यहाँ पे घटिया और भाषा एक यूज कर एस्पेक्ट रहे हैं। है। 1932 उस टाइम पे जब ही वाज अ सिविल डिसोबीडियंस प्रिजनर, उस टाइम पे उन्होंने जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो मूवमेंट शुरू किया, ही डिमांडेड स्पेशल फैसिलिटीज just to focus on that part of his campaign, and the government gave him the extra facilities. तो आई मीन ही कंपार्टमेंटलाइज्ड। एक है सिविल डिसोबीडियंस के लिए प्रिजन गए हैं, प्रिजन में रखा गया है। अब प्रिजन में रहने के बाद ही इज सेइंग दैट आई वांट मोर फैसिलिटीज बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन अनटचेबिलिटी, एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन। तो ये काफी कंफ्यूजिंग है। आई मीन ही इज अ मास्टर ऑफ कंफ्यूजिंग पीपल। आई मीन इवन द ब्रिटिशर्स वर कंफ्यूज्ड, हम तो क्या चीज है। So he was getting even extra facilities during that time also. Aga Khan was a culmination, and you are right. I mean, why? I don't know if he ever objected to it. I have never seen anywhere. neither have I, तो I don't know. Yeah. तो उसके बाद में ये अगर तो हम कंपेयर करेंगे कि उनकी कंडीशंस वहाँ पे कैसी थी, कैसे रखा गया था, डॉक्टर संपत थोड़ा सा बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा था बीच में कि क्योंकि आप ही की बात मैं लोगों से करता हूँ कि बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि वीर सावरकर जब जेल में थे वहाँ पे अपने अंडमान में, तो उनका साथ क्या व्यवहार हुआ था, कैसे उनकी हालत ख़राब थी। और मैं ये लोगों को बताता रहता हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास वाले आदमी हैं, हमने खुद ज़िंदगी में 30-35 साल की उम्र तक इसी नहीं का सुख नहीं भोगा था। आज के दिन में अगर एयर कंडीशन नहीं मिले तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है एक रात को। तो थोड़ा उनके बताएं आपके कि आपके मैंने पहले आपसे सुना था, तो वो मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आज आपसे बातचीत हो रही है तो आपसे हम सुने कि उनकी हालत कैसे उनको ट्रीट किया गया था अंडमान वहाँ पे उसमें सेलुलर जेल में। तो जो 11 साल उन्होंने वहाँ पे बिताए सेलुलर जेल में, आई थिंक वो नरक यातना से कम नहीं था। और जो मूलभूत मानव अधिकार हैं, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फैसिलिटीज, वो भी उनको मुहैया नहीं कराया जाता था वहाँ पे, कि अच्छा खाना हो या फिर शौच की व्यवस्था हो, या मेडिसिन, अगर बीमार पड़ जाए तो अस्पताल शौच कहाँ शौच करने की जगह क्या थी उनके लिए? तो खाने से शुरू करते हैं कि मोस्ट ऑफन जो खाना मिलता था उनको और बाकी राजबंदियों को वहाँ पे सेलुलर जेल में, वो बासी खाना होता था। उसमें कीड़े मकोड़े, पीसेस ऑफ रेप्टाइल सब गिरे हुए होते थे। जो बावर्ची था उसके पसीने और उसके बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलके द पॉरिज वुड कम टू द प्रिजनर्स। तो वो खा के बहुत सारे जो राजबंदी थे उनको डायरिया हो जाता था। और देवर फिक्स्ड टाइमिंग्स जब आप शौच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टॉयलेट्स। तो अगर डायरिया हो रहा है और दिन भर आपको जाने की ज़रूरत है तो आप जा नहीं पाते। तो अधिकतर जो राजबंदी थे और सावरकर भी अपने ही सेल में दे हैड टू डू मलमूत्र विसर्जन और सिट एंड स्लीप एंड ईट अमिडस्ट योर ओन स्क्वालर, योर ओन एक्सक्रीटा। और बहुत सारे 6 दिन से लेके 1 महीना 2 महीना तक इनको भी स्टैंडिंग हैंडकफ्स के पनिशमेंट्स, लेग्स टाइड बाय दोज आयरन बार्स, एंड ऐसे में भी people, the prisoners would urinate and defecate standing, and that would be in their own cell. In fact, even Sri Aurobindo writes that कि जब उनको 1907-08 में जेल में रखा गया 1 साल, तब एक ही बाउल दिया जाता था which had to be used for eating and also to clean yourself after using the toilet. So that was the kind of treatment that most of the revolutionaries, अभी भी जो सेलुलर जेल में उनके कमरे में that कटोरा is there, that was the कटोरा that was used both to, you're eating in the same thing and you're using it to clean yourself after going to toilet. That is the condition that one is इनमें living से in. किसी के नाम मालूम है ये कौन से लोग थे जो वहाँ पे ये काम करते थे? इंडियंस होंगे ना, अंग्रेज तो नहीं होंगे वहाँ पे? हाँ, ये सारे, I mean, they were all these Pathans. The Barry was of course the jailer, the main jailer in cellular jail, but the jamadars जो वहाँ पे थे वो सारे they were all Indians. They were Pathans from the northwest पठान frontier कुछ अफगान्स होते थे, northwest frontier province उस साइड के थे. And that was the whole thing with Savarkar की
इतनी यातनाएं अगर सहने के बाद द हिंदू मुस्लिम एंगल आल्सो वुड कम कि आप किसी प्रिजनर को बोलो कि you convert, then your punishment will come down. Any human being will say भाड़ में जाए हमारा रामा कृष्णा, will say Allah and go to the other side so that the punishment comes down. तो गाय का मांस उनको खिला के they would convert with no conviction ki it's not a conversion due to conviction, it is just out of allurement and out of necessity. तो और वो prisoners अगर वापस they wanted to come back to their parent religion, there was no option. तो इसीलिए वो बाद में by 1918-19 when jail conditions became little better, he started the Shuddhi movement to bring these prisoners back, and तभी उनका जो हिंदुत्व became so important for him, seeing all these conditions in the jail. So continuing with the jail conditions itself, इनको unlike these prisoners who are given letters and हमें कौन-कौन से अखबार चाहिए that is being written, I want Times of India, I want Bombay Chronicle, यहाँ no letters, no paper, pen, books, nothing. And Savarkar used to use his nails or use a piece of charcoal to write on the walls of the cell जहाँ पे उन्होंने अपनी मराठी की कविताएं लिखी थी. Almost 3,000 verses of Kamala, Saptarshi जैसी कविताएं. And just to spite him, Barry used to come and whitewash those walls right in front of his eyes. But this man had memorized all those verses, and then after coming out of jail, these got published. And इनमें से कुछ लोग, ये जो लोग आप जिनकी बात कर रहे हैं बैरी वगैरह की, ये इनका 47 के बाद में क्या हुआ इन लोगों का? कौन? जो ये लोग वहाँ जेल में जो स्टाफ था जिन्होंने ये पूरा जिन्होंने कुकर्म किया इन लोगों ने, इनका पार्टीशन के बाद जो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल प्रोविंस में वो तो पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन क्या कुछ लोग भारत के भी रह गए थे? कुछ अफसर वगैरह उनके रहे होंगे यहाँ पे? Most of them left actually. Most of them left India after 47. नहीं, लेकिन यहाँ तो इंडियंस होंगे ना. ये जो आप कह रहे हो कि नीचे का काम करना मैक्रो लेवल पे तो सारे इंडियंस करते थे. नहीं, ये लोग तो ऑब्वियसली भारत में रह गए. ये तो ऑब्वियसली. तो ये लोग, इनका कोई नाम पता किसी का नहीं मालूम कौन? जैसे आपके जलियांवाला बाग वालों को तो लोगों ने पेंशनें दी इंडिपेंडेंस. नहीं, इसीलिए अनुज भाई, इसीलिए बोलता हूँ ना, हमारे इतिहास चर्चा में हमने कोलैबोरेटर्स की टॉपिक कभी टच ही नहीं किया है. इट्स टू सेंसिटिव, कंसीडर टू सेंसिटिव अ टॉपिक. कोलैबोरेटर कौन थे? जैसे आई मीन ये बहुत आपने भी पढ़ा है, हम दोनों ने इसका डिस्कस किया है. पंडित नेहरू का जो 1946 में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वेयर ऑन द टॉपिक ऑफ वॉर क्रिमिनल्स, ही सेज के सबसे बड़े वॉर क्रिमिनल्स दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम इनको देख लेंगे. तो जब पावर मिलता है सब भूल जाते हैं. सो ऑल दोज आर एम्प्टी थ्रेट्स, रेटरिक, एंड नथिंग हैपेंस एक्चुअली. क्योंकि हम लोगों ने न्यूरेमबर्ग वॉर क्राइम्स ट्रायल जो हुए हैं, वो टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल में, तो हमारे लोग उनको बैठ के खुल्लम खुल्ला सपोर्ट अभी भी करते हैं. तो वो प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों लगाया जाए? आप लोगों ने भी तो वॉर क्राइम्स की, आप लोगों ने कोलैबोरेशन किया, आप लोगों ने हम लोग को मारा पीटा. तो जैसे आप लोग उनको पेंशनें दे रहे थे आपके जलियांवाला बाग वालों को, आई एम श्योर कि ये काला पानी में जो जिन लोगों ने ये गलत काम किए, इनके बच्चे ही बैठे होंगे सेक्रेटरी बनकर. हाँ बिल्कुल मोस्ट ऑफ देम. और बहुत सारे, जैसे दैट फेमस एग्जांपल यशपाल का जो है, जाने से पहले अंग्रेजी चिट्ठी जो है कि वी आर हैंडिंग हिम ओवर, वी आर लीविंग. अब जो हमारे जिन लोगों ने हमारा साथ दिया सत्ता परिवर्तन के बाद, आप उनका ख्याल रखिए, उनको किसी तरह का कष्ट न हो पाए, ये कह के गए थी अंग्रेजी सरकार. एंड द सक्सेसिव गवर्नमेंट टू ग्रेट केयर. उनको तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पता नहीं क्या क्या. राज्यसभा का नॉमिनेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठा हुआ था वो. अच्छा, ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बट ये मैं यही बोल रहा हूँ ना, कोलैबोरेटर्स का इतिहास हमने ढूंढा नहीं है, हमने कुछ रिसर्च नहीं किया है, एक्सप्लोर भी नहीं किया, टच भी नहीं किया है. अदरवाइज आप ये सोचो कि दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. द नंबर ऑफ फाइल्स दैट वर बर्न्ड, डिस्ट्रॉयड. दिल्ली रेड फोर्ट में there was one officer specially appointed to burn files, and unofficially his designation was chief burning officer. उनका काम ही था फाइल जलाना. तो 7 दिन तक दिल्ली में धुआं रहा, काला रहा दिल्ली पे burning files. And that is only Delhi. But I have heard from my elders from the small town that I come from, कि वहां पे भी थाने में सारे फाइल्स, लोकल इन्फॉर्मर्स, ये वो जो थे, सारे फाइल्स डिस्ट्रॉय किए गए थे. They were
just torn apart. They were burned. They were drowned in water. They were destroyed. So all this information इन लोगों के बारे में खत्म किया गया था. और ये But जो 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 आप लाल किले की बात कर रहे हो वो पंडित जी की परमिशन से हुआ था. जरूर तब इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम है. इंटरिम He was the he was already the the prime vice minister. president of Viceroy Executive Council. He was the prime minister. तो ये जब सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय किया जाता है and then collaborators become the subsequent rulers, the new Brown Sahibs. They occupy plum posts and continue hereditary occupying important posts. So that is one aspect which is never touched. I'm not surprised. I'm not surprised at all. Vikram, just one extension of what Anuj asked you about the treatment given out to Savarkar, which you described. There is one allegation again from the Rahul Gandhi camp, the Congress historians camp, that Savarkar compromised and he was given some relaxation and good clerical posts in Andaman and Nicobar, and he enjoyed, after that, he enjoyed some the confidence of the local administration, and he was not tortured at all. He was not troubled at all. No, I mean, as the First World War progressed, the government itself started bringing a lot of relaxations. Once Barry was out of cellular jail, the kind of inhuman tortures, the Kolhu ka bail ka punishment and all that was given, those things started coming down. And these were the first batch of prisoners, the Bengal revolutionaries mainly, who were in the Alipore bomb case, Maniktola, conspiracy. And from Maharashtra, you had the two Savarkar brothers and Vaman Rao Joshi. So mainly Bengal and this. And then it was only after 1915 that once the Gadar movement started fizzling out, the Gadar party, then a lot of Punjabi and Sikh, prisoners started coming in. So then the focus, अब न्यू बैच आता है हॉस्टल में तो रैगिंग उसकी पहले होती है ना, जो सीनियर बैच है उसको थोड़ा ढील देके द न्यू बैच इज टॉर्चर्ड. सो सिमिलरली हियर आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ आयर वाज द Sikh prisoners who came later. The earlier set of prisoners had already undergone all that torture, so unpe thoda things started becoming a little less stringent. But overall, the condition of the jail itself had come down, especially as the war progressed. And by the time the war ended, and you had the royal proclamations of Emperor George, and so on, where pardon was being given to people, clemency, amnesty to mass amnesty to political prisoners, not only in India but across several colonies. Then prison reforms also started coming in, and the same prison which had such terrible conditions initially, वहाँ पे एक लाइब्रेरी शुरू हो गया जहाँ पे लोग जाके किताबें पढ़ सकते थे. And there also, I mean, the prisoner used to consult Savarkar to say, क्योंकि he was one of the very few educated prisoners in that place, because most of the other revolutionaries were young men, maybe late teens, early 20s. शायद उनको पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने ठीक से की नहीं होगी. शायद सावरकर हो, बारिंद्रनाथ घोष, औरोबिंदो घोष के छोटे भाई, these were one or two people who knew English, who had been who were literate. तो उनकी सहायता से वो लाइब्रेरी भी शुरू की गई थी. Then some classes could be held, and by 1920 the conditions improved to an extent that the prisoners were given the option to cook in their own cells. So it was not some special extra privilege given only to him, but to all the prisoners. धीरे धीरे the prison reforms. ये भी मन में रखना, ये भी सामने रखना जरूरी है विक्रम. I think most people who level this allegation against Savarkar forget the fact that most of the revolutionaries were released in 1917, 1918. So by 1919, even the most terrifying characters of Bengal revolutionary groups, the Anushilan, Jugantar, like Trilokanath Chakravarti Maharaj, Barin Ghosh, they were back in Bengal. But although they were released, Savarkar was held back. तो इतना ही अगर कोलैबोरेशन होता तो सावरकर को तो सबसे पहले छोड़ देते. बिल्कुल बिल्कुल. और वो तो सचिंद्रनाथ सान्याल मेंशंस दैट इन हिज मेरा बंदी जीवन कि मैंने सावरकर के कहने पे
हूबहू उन्होंने जैसे एक याचिका दायर की थी, मैंने भी ऐसे ही याचिका दायर की, मुझे रिहाई मिल गई पर उन दोनों को नहीं मिला। हाँ, और उसका कारण भी वो बताते हैं कि ब्रिटिश कंसिडर्ड देम एज डी कैटेगरी डेंजरस कैटेगरी क्रिमिनल्स, और उनको अगर छोड़ दिया जाता तो बंबई प्रेसिडेंसी में जो क्रांति की ज्वाला बुझ गई है वो फिर से भड़क जाएगी। तो इससे डर के अंग्रेजी सरकार उनको वापस नहीं भेजना चाहती थी। तो सचिन नाथ सान्याल का भी पेटिशन, आई थिंक आई हैड सेंट यू, कि ही हैड आल्सो साइंड अ पेटिशन, he सो had हैड also signed the petition. उलासकर दत्त, बहुत सारे लोगों ने पिटिशंस डाल के दे केम आउट, बिकॉज द गवर्नमेंट वाज गिविंग द ऑप्शन टू ऑल ऑफ देम कि आप पिटिशन डालो तो बाहर निकलोगे, क्लेमेंसी, होलसेल क्लेमेंसी है, एमनेस्टी इज बीइंग गिवन टू एवरीवन। तो कौन सा मूर्ख प्रिजनर होगा जो उसका उपयोग नहीं लेगा? तो एनीबडी वुड एक्चुअली डू दैट, जस्ट एज if the government is giving you a monthly allowance, you will take it, whether you are Gandhi or you are Savarkar or anybody else. So similarly, if the government is giving you an option to do, to take, this is the ये सनल का This is handwriting है। Sachindranath Sanal's या, petition. yeah, उनका हैंडराइटिंग कितना सुंदर है। beautiful. So that there is no confusion, नीचे signature दिखा रहा हूँ. So it's and this is a National Archives file, so there should not be any confusion. Yeah. मेरे ख्याल से किसी को एक्सेल शीट बना करके ना गांधी जी का और वीर सावरकर जी का दोनों का कंपैरिजन No, it is करना very चाहिए। curious also. This is I don't know whether this is a coincidence that once these people came back, Marin Ghosh, Trilakanath Chakraborty, Sachin Sanal, these dreaded revolutionary terrorists, as they were called at that time, when they returned, that is the time when Gandhiji started his 1 year campaign. Say he entered into a pact with the revolutionaries that for 1 year, don't do anything, sit quiet, follow my path, and in 1 year I will get you Swaraj. तो आज So I don't know whether that is a coincidence or something, but obviously for 1 year they waited and then they started their own activities back. So whether what kind of plan that was, I don't know. But the fact remains that all these revolutionaries were back to their home states, but Savarkar was still held back. So I don't know. I mean, any person with self-respect, how could any person with self-respect accuse a man like that of selling out or collaborating? Or And even after coming out in 1924, if you had Right. actually sold out by then, like I mentioned, कि the man is a trained lawyer, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में उसको बैरिस्टर की नौकरी मिल सकती थी, या फिर he could have joined. बाद में डॉक्टर अंबेडकर was a part of the Viceroy's Council because he was a educated man, a lawyer, and all of that. So similar comparison could be made of Savarkar too. He was also a barrister. He was well trained. He was English educated. He was a writer, journalist. So government could have made use of him in multiple ways. Instead, continuous surveillance. Somebody who has sold out to you, you put them under surveillance. I don't think the British government is so crazy. And 5 years detention is being extended to 13 years. Every 2 years, when it comes for a review, they say we don't trust the man, so extend the detention. So when the official records are telling you that the British government did not trust this man, we are forcibly saying that this guy had actually sold out to them. I just don't know where the two square up. और एक चीज और भी है कि जब अगर अपने लाइफ टाइम में गांधी जी ने भी कभी उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, किसी ना ने नहीं गांधी जी कहा, ने बोला, ना सुभाष किसी ने नहीं बोस ने, कहा। सभी ने तारीफ When, की। when नहीं, आज ये on लोग the बातें कर रहे contrary, अनुज 37 में जब उनका डिटेंशन पीरियड खत्म हो गया, all the Congress leaders issued public statements hoping, wishing that Savarkar would come back to Congress. Yes. They wanted him back in Congress, but Savarkar went ये to Hindu ये Mahasabha. साले खुद भी पाप कर रहे हैं, हमसे भी पाप करवा रहे हैं कि बे मतलब पे उनका नाम घसीट रहे हैं, हम लोगों को गांधी जी का खींचना पड़ता है। So Pandit Nehru issued a statement welcoming Savarkar back into public life and wanted him in Congress. Subhash Bose wanted Savarkar in Congress. He issued a public statement. ये आप हाईलाइट करो, पंडित जी ने क्या बोला? पंडित जी ने क्या बोला था? Pandit ji ne the same thing that I mean he wished that Savarkar joined back Congress. Subhash Bose issued a statement from Bombay saying he wished that Savarkar joined back Congress. तो यार ट्वीट करो यार, ये अच्छी बात है, ये पंडित जी वाली बात ट्वीट करो ना। और कंट्रास्ट इस बात की है कि सावरकर अगर कोलैबोरेटर होता तो again I want to reiterate this point particularly specifically for the
for some people in Bengal who want to accuse that we should not mix Netaji and Savarkar because they were different ideologies. This is not about Savarkar. This is about distortion of history. This is, you can agree with Savarkar's politics, you can disagree with Savarkar's politics. Even Subhash Bose disagreed completely with Savarkar's politics. That did not stop him from publishing a very eulogizing article in his own forward blog. He praised sky high Savarkar, and I have showed it in the book. I have written articles, I've reproduced that article on the website, on portals. So that is a different issue. Politics नहीं of नहीं, Savarkar, इसका politics इसका of मैं Bose is a इसका different जवाब issue. मैं इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब, पहली बात, जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको बोलो कि तुम्हारे वहाँ पे तो उनको नेताजी को तोजो का डॉग बोलते थे, तब तो तुम्हारी जुबान खुली नहीं। मैं नेताजी का, सुभाष बोस का फॉलोवर हूँ। आप मुझे बताइए, जब वीर सावरकर ने सारी जिंदगी सुभाष बोस की तारीफ करी है 47 के बाद से, सारे स्टेटमेंट उनके फेवर में दिए, ठीक है जी, मरने से पहले इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा कि इंडिया के आज़ाद होने में उनका मेन भूमिका है। तो अगर मैं नेताजी का फॉलोवर हूँ और सावरकर नेताजी की तारीफ कर रहे हैं जीवन पर्यंत, तो मैं क्यों उनको क्रिटिसाइज करूंगा? मैं तो उनके पीछे पड़ूंगा जो उनको तोजो कुत्ता बोलते थे बैठ करके, आज बैठ के हमको लेक्चर दे रहे हैं बैठ करके। सावरकर ने कभी सुभाष बोस को 47 के बाद क्रिटिसाइज नहीं किया। डिस्टॉर्शन तो ऐसे ही होता है ना, डिस्टॉर्शन यही पूरा होता है सपोर्ट किया ये कि रेडफोर्ड ट्रायल को। लोग बोलते रहते हैं, इवन द बीजेपी इज रिस्पांसिबल फॉर दिस डिस्टॉर्शन, कि वही सेम कहानी रिपीट करते रहते हैं कि नेताजी के लोग जाके, सुभाष बोस के लोग जाके श्यामा प्रसाद की मीटिंग तोड़ दिया, पत्थर फेंका श्यामा प्रसाद के ऊपर, उनका फोरहेड पे इंजरी हो गया। बहुत बड़ा चढ़ा के ये स्टोरी बार बार बोलते रहते हैं। वो लोग ये स्टोरी नहीं बताते हैं कि द सेम ट्रीटमेंट दैट वाज गिवन टू श्यामा प्रसाद वाज आल्सो गिवन to the head of the Bengal Provincial Congress, who later became the head of Bengal Congress after independence and was a minister also for some time. तो उनको भी सेम ट्रीटमेंट मिला था। तो मतलब क्या हुआ? मतलब if that is an indicator के सुभाष बोस dislike श्यामा प्रसाद, then you have to admit that सुभाष बोस equally dislike the Congress. उसके बाद जब टाइम आता है तब बोलते नहीं, सुभाष बोस was always a congressman. ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा बोला हो, तो बहुत कुछ बहुत बोला हो, तो गांधी और ज्यादा किया है। क्या बोला है And both Shama Prasad and Savarkar, they were extremely respectful towards Subhash Bose after 1945. They never uttered a critical word about him, not a single. अब वही पे बताइए ना कि मैं नेताजी का फॉलोवर होकर के कैसे उनके खिलाफ बोल सकता हूँ जब वो नेताजी की तारीफ कर रहे थे। In 1952 में जब अभिनव भारत was dissolved, the revolutionary group that Savarkar had started in 1900, उन्होंने कहा कि अब we have got independence, so if you want satta parivartan, it has to be through the ballot and not bullet. So there is no relevance of this organization. He conducted a 3-day conference in Pune, and all through the 3 days, in the back the photo was of Netaji, and he time and again he mentioned that today if we have got freedom, it is because of this man whom we need to thank. तो it is a very। और बताइए डॉक्टर संपत, क्रिटिसाइज कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कलकत्ता में जिनके बाप दादाओं ने उनको वोट दिया, जिन्होंने कहा था कि वो नेताजी तोजो कुकुर थे, तोजो कुत्ते थे। तो ये जो खुद अपने गिरेबान में जाके देख नहीं रहे कि तुम लोगों ने उनको इतनी गालियां दी हैं बैठ के, आपने उनके बारे में इतने अपशब्द बोले, कभी ढंग से आपने माफी नहीं मांगी, और आप पीछे पड़ गए हाथ धोकर के उस आदमी के पीछे जिस आदमी ने पूरी जिंदगी उनकी तारीफ करी बाद में। चंद्रचूड़, आपको बताना चाहिए कि बिकॉज द टाइम एंड अगेन ये भी बताया जाता है कि आईएनए ब्रिगेड्स वर नेम्ड गांधी, नेहरू एंड ऑल दैट, एंड नॉट सावरकर एंड। मैं बोल के थक चुका हूं कि ये these 3 brigades were not named by Netaji. These were named by Mohan Singh and Rashbihari Bose. They had to name it after Gandhi, Azad and Nehru, because उस टाइम पे जब आईएनए जब फॉर्मेशन हो रहा था, because of the Congress had a very strong representation amongst the expats in Southeast Asia. तो उसमें एक large section were followers of Gandhi ji who believed in non-violence, and they did not like the idea of formation of INA. तो उनका कहना था कि INA ठीक है, बहुत झगड़े के बाद ये तय हुआ INA फॉर्म कर लो, but before the INA makes any move, we must have the formal permission from the Indian National Congress in Delhi. तो ये situation जब था and INA was being formed, naming the brigades after them
was a tactical ploy. It was a tactical thing. अब जबकि आईएनए के सोल्जर्स खुद जब बोल रहे हैं, they were not asking कि गांधी जी को ले आओ, नेहरू जी को ले आओ, आजाद को ले आओ. They were writing that bring Subhash Bose. From the very first moment, they were writing letters to Mohan Singh, to the Japanese, the soldiers who were till the other day with the British Indian Army. They were writing letters to the Japanese, to Mohan Singh, Raspberry Bose, that just get Subhash Bose here. And we are ready to work under his leadership. He is the ideal leader for us. तो एकदम शुरू से ये बोल रहे हैं. तो उस हालत में जब गांधी नेहरू आजाद ब्रिगेड हो रहा है, there has to be a political context to it. Without involving the Indian National Congress, it was not possible to take the cause of the INA forward. तो ये रासबिहारी भी समझते थे, ये मोहन सिंह भी समझते थे. इसीलिए नेताजी जाने के बाद जो एक नया ब्रिगेड बना, which actually went spearheaded the attack in the actual battle, it was not named. The soldiers in that brigade named unofficially, informally, Subhash Brigade. Subhash Brigade was not the formal name given. The soldiers themselves named it Subhash Brigade. So Subhash Bose, Netaji himself never named this Azad. डॉक्टर विक्रम, एक बात और भी है उसमें कि ये सुभाष बोस ने के पास कोई चॉइस नहीं थी. वो साउथ ईस्ट एशिया पहुंचते हैं, जो उनको वहां पे मैन मटेरियल मिला वो उनको चॉइस नहीं था. ही जस्ट हैपेंड टू हैव दैट थिंग. सो उसमें से चूज करके जो कुछ हो सका उन्होंने कर दिया, और 5-6 महीने की ट्रेनिंग दी है मुश्किल से. ये लोग समझ रहे हैं कि बैठकर के सुभाष बोस इंडियन नेशनल आर्मी को ट्रेन के जैसे आपकी इंडियन आर्मी ट्रेन हो रही है 100 साल से. 6 महीने का टाइम था, जो मटेरियल वहाँ अवेलेबल था, जो लोग वहाँ अवेलेबल थे. इनफैक्ट 1-2 आईएनए का बहुत मतलब उसी का सुभाष बोस की गवर्नमेंट का सीनियर आदमी था, वो पहले कांग्रेस के साथ में था. तो उसने बोला, उसने गवाही में बोला बाद में कमीशन में जाकर के कि मैंने सुभाष बोस से पूछा कि आप गांधी जी के बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे उल्टा सीधा. उसने कहा नहीं, मैं गांधी जी के साथ में. तो उनको बेसिकली अब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आप एक विदेश में बैठे हुए हैं, आपके पास में ये लोग आपके हाथ में आए हैं, तो वहाँ इस तरह की आप इमेज प्रोजेक्ट नहीं करेंगे जो भारत के अंदर है. और है कि उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कांग्रेस इकोसिस्टम का हिस्सा थे. सुभाष बोस का मेन एम था कि सबको साथ लो, ले करके अभी अंग्रेजों पर छोड़ जाओ. तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो जुमला भी दिया था कि वो फादर ऑफ नेशन करके. तो लोग उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, और लेकिन उठा करके उसको एज इफ कि ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स गांधी जी एक्सेट्रा. बट वो अलग कहानी. And ये collaborator के issue पे there is an interesting contrast that comes to my mind. B.N. Khare, who was formerly the Chief Minister of Central Provinces, and he was kicked out of Congress by Sardar Patel, and that incidentally happened in 1938 when Subhash Bose was the president. So later on he became member of the Executive Council, Viceroy's Executive Council. तो उनके बारे में तो नहीं बोलते कि आप कोलैबोरेटर बन गए. जितने सारे वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स हुए जो पाकिस्तान में नहीं गए, वो भारत सरकार में शामिल हो गए. जो ब्यूरोक्रेट्स उस टाइम पे थे, गिरिजा शंकर वाजपेयी कौन सा रेवोल्यूशनरी थे, कहाँ के फ्रीडम फाइटर थे. तो वो जाके जब नेहरू के वहां बन गए, कोलैबोरेटर की बात यहाँ नहीं आती है. सर गिरिजा शंकर, ऐसे बहुत सारे सर्स हैं, ऐसे बहुत सारे सर्स हैं. तो एक और चीज बीच में आई थी जिसको मुझे बड़ा देख के बहुत खराब लगा. तो सावरकर जी को बैठ के वो सीआईए का एजेंट बताया जा रहा है, और किसी गूगल में बैठ करके पता नहीं क्या वो डॉक्यूमेंट उसको पढ़ने समझ में मतलब ये मेरे ख्याल से डेफेमेशन जानबूझ के, बिकॉज मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं जो किताबें लिखते हैं. एक कोई डॉक्यूमेंट निकल के आ रहा है सीआईए का जिसमें नाम लिखा हुआ है सावरकर. अगर कोई भी आदमी अगर संपत होगा तो डॉक्टर विक्रम संपत हो जाएगा. कोई भी आदमी धरे तो अनुधर होगा. तो कोई सावरकर है, कोई जर्नलिस्ट है. अच्छा, एक डॉक्टर संपत, उसमें वो डॉक्यूमेंट क्या बता रहे हैं कि ये कोई सावरकर जर्नलिस्ट है पुणे का, ये 1961 में जाता है अमेरिका वगैरह में अपनी मिसेस के साथ में. तो 1961 में वीर सावरकर की क्या इतनी ऐसी सेहत थी कि वो अमेरिका जाएंगे या और कंट्रीज में जाएंगे? उनकी मिसेस उस टाइम पे थी कि नहीं थी? वो ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट डेज ऑफ हर लाइफ, 1 साल बाद वो चल बसी थी. और ये खुद उनको आई थिंक 2-3 हार्ट अटैक्स हो गए थे, आर्थराइटिस, हर तरह की बीमारी थी. ही कुड नॉट इवन. ये तो डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये सावरकर तो न्यूयॉर्क में कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठा हुआ लुथेनियन जो है उन लोगों से. तो ये बेसिक चीजें इनको पता नहीं है, जो इस तरह की वाहियात बातें बैठ के लिख रहे कांग्रेस की किताबों में कि सावरकर सीआईए के एजेंट थे. और वो आदमी एक जर्नलिस्ट है केसरी में. तो केसरी में सावरकर वाज नेवर अ जर्नलिस्ट विद केसरी.
तो वो 61 तो के अंदर वो भी हाँ 61। 1961 में जर्नलिस्ट है। तो अफ्रीकन नेशंस लेकर सावरकर अफ्रीकन नेशंस लेकर पड़ गए थे 1961 में, मतलब। हाँ तो और ये जानबूझ के किया गया, ये मुझे पता है कि वो जिसने भी किताब लिखा वो बड़ा समझदार इंसान है, वो जो भी कर रहा है जानबूझ के कर रहा है, उसको पता है कि रियलिटी नहीं है, सिर्फ ये कि नहीं, द सेम उसे थिंग, पता है द कि सेम पर्सन किताब जो हिंदी की है, लोगों को वो बेवकूफ कार्टून बनाना है। छापा था ना, वो हाँ वही है, कार्टून छापा था जो कि हाँ, नेताजी को कि तीर मार नेताजी रहे है, हैं। जिसने भी चश्मा पहन लिया वो नेताजी हो गए हैं। 45 46 में नेताजी कहाँ से आ गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में? वो तो मर चुके थे, कांग्रेस वर्किंग कांग्रेस कमेटी में तो निकाल दिया था, मार उनको भगा 45 दिया। 46 में सुभाष बोस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कहाँ से आ गए? इनको सीधी सी बात ये डिफरेंस करना नहीं आता। आसफ अली के फेस और सुभाष बोस का फेस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, और ये इतिहासकार बन के किताबें लिखते हैं नहीं, और मेरा इन्हीं मानना को है कांग्रेस चंद्रचूड़, प्रमोट मेरा करते मेरा हैं। मानना ये कि ये उनको बिल्कुल मालूम है, वो आदमी बहुत तेज तर्रार आदमी है, जिसने भी बात करी है वो जानबूझ के कर रहे हैं। होता क्या है कि वो हिंदी में किताब लिखते हैं और ऐसे हाँ। ये चीजें डाल देंगे, डॉक्यूमेंट डाल देंगे ताकि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए। तो ये जो भी करा है क्योंकि इतना बेवकूफी कोई भी जर्नलिस्ट नहीं करेगा, ये जानबूझ के ये चीज की गई है। बदनाम करना है, बदनाम करो, और ऊपर से Yes, Vikram, as a historian, this is a very important question as a historian to you. Okay, why is there so much antipathy towards Savarkar? Institutional antipathy, which is of recent times. Indira Gandhi तक तो नहीं था. उसके बाद, why has the Congress developed, or the left ecosystem, Congress ecosystem developed such a dread for Savarkar? What could be the reason? I mean, from a scholarly point of view. I don't think it is recent also Chandrachud, because 1937 में ही मैंने डाला था अपनी किताब में कि जब Savarkar refused to join the Congress and gave that damning statement कि I'd rather be in the last line of the patriots than in the first line of the traitors, and that according to him the Congress was deep into treachery because it had gone into appeasement politics which would lead to split of the country. और कुछ और चीजें उन्होंने बताई थी when there was some issue of rape and molestation of women in the northwest frontier province. तो कुछ एक असेंबली में कुछ बातें हुई थी, and one of the Congress members had laughed and said something about Mahabharat and Draupadi and some things like this, about which Savarkar gave some very caustic, in his typical fashion. He gave caustic replies to that, and that led to hatred for him. Ek to it was a shock that he was not going to join the Congress, which, as both of you rightly said, there were invitations for him to join. तो वो नहीं किया, दूसरा हमारे पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है ऐसे and defaming us. तो wherever he was going on his प्रचार as president of the Hindu Mahasabha, काले झंडे हमेशा उनको दिखाए जाते थे. 2-3 बार उन पे जानलेवा हमले भी हुए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द महासभा. 1-2 बार तो one of the persons had to literally rescue him through the back door of his house and take him away to the railway station. He was almost going to get killed. And then this antipathy continued when he became a political rival, as an electoral rival also, as the Hindu Mahasabha was till then, it was hardly a party to reckon with. Now it had become a electoral component. तो तब से लेके this antipathy for him continued. It was there even when he was fixed in the Gandhi assassination case, as Ambedkar himself said, कि it was a political match fixing done at the behest of the highest powers of the government. And Rihai ke baad, during the Nehru Liaquat Pact, how even though Savarkar had not even opened his mouth, he was put under detention in the Belgaum prison for more than 6 to 8 months, and then made to sign this one that till the first general elections, he will keep away from politics. So not only he, the only political opposition at that time was the Hindu Mahasabha. So till the first general elections, no political opposition could talk anything. So you literally won the election unilateral without anyone opposing you. And even later on, 1957, when the centenary of the 1857 uprising was being celebrated, and Savarkar, since he had written that book on 1857, there was a grand function organized in Delhi. Many of the descendants of the revolutionaries were all felicitated. The group went to Prime Minister Nehru and asked him to preside over the event. And he point blank refused, saying, I cannot share stage with Savarkar. I have, of course, read his book
on 1857, and it has inspired a lot of young people. But that is not history. That is all fantasy fiction, this, that, and he will also be embarrassed, and I'll also be embarrassed. So while I respect him, I don't want to share stage with him. So you decide whom you will invite, and the organizing committee actually dropped Nehru and invited Savarkar to the program in Delhi. So that antipathy, I think, continued. The only small blip in that was Indira Gandhi, who I think to several ways. I mean, she was an exception in the Congress history. The way she dealt with Pakistan, Bangladesh, including for the revolutionaries, the kind of reverence I think that she had. She was the one who brought Madan Lal Dhingra's ashes to India and got it consecrated in Amritsar. So a lot of things that she did, I think. I'm thinking of the so-called Gumnami Baba. He talked about her कि she has a better sense of national security compared to Nehru and Lal Bahadur. Yeah, correct. That was now backhanded compliment he gave to her. So एक आपसे मुझसे और सवाल पूछना था ये वाला इसी में कि जी, आपने ये 47 की बात की CID या IB की फाइलें देखी हैं सावरकर जी के बारे में? वो नहीं मिलते अवेलेबल है कि नहीं? नहीं, वो सब महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस के पास हैं, पर किसी को एक्सेस नहीं दिया जाता उसका। वो लेना पड़ेगा। इवन नाउ क्योंकि मैं 2-4 अभी देख रहा हूँ, वो रेलेवेंट नहीं है। मैंने कुछ और फाइलें अभी देखी बीच में करके। इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो जिस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, मतलब चंद्रचूड़, मैं देख रहा था फाइल करके, वन ऑफ दी पर्सन्स IB का जो नेताजी डेथ इंक्वायरी कर रहा था, उसको भी उन्होंने एक्सटेंड किया उसका काम इंडिपेंडेंस के बाद में कि 2 महीने और काम कर लें यहाँ पे। तो वहाँ तक के रिकॉर्ड अवेलेबल हैं कि वो कह रहा है मेरी पेंशन मेरे को वहाँ पे भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। So ये they must have been tracking Savarkar after independence. तो वो CID और IB की फाइलें बिल्कुल होनी चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए और होगा भी। हाँ, लेकिन ये सूचना के अधिकार में तो नहीं होगा क्योंकि RTA में ये कवर नहीं आता IB और CID का। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे अप्रोच करके मे बी कोई जिनका पहुंच IB का शायद अगर ना भी हो तो आपका CID स्पेशल ब्रांच के फाइल्स होंगे, बट दे आर आल्सो नॉट RTA में नहीं आता, वो RTA में नहीं आता आपको। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे जैसे मान लीजिए कि मुझे पता नहीं अभी महाराष्ट्र के कौन गृह मंत्री जी कौन है, कोई उनका जानने वाला हो, जैसे हम लोग को, so the state government will have to be पूछा जाए, उनसे जाकर के उनसे बात की जाए कि ये है करके, और आप हमारे पॉलिटिकल लेवल नहीं, राइट, पॉलिटिकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट will have to be डॉक्टर संपत आपने इतना उस पे काम किया करके कि आपको वो एक्सेस दें, उसकी अगर कोई बोले बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूके में कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग उन्हीं का मॉडल फॉलो करते हैं कि रिसर्चर्स को और स्पेशल बेसिस, जैसे आपका मित्रोखिन आर्काइव बना था तो उन्होंने क्रिस्टोफर एंड्रयूज को उन्होंने एक्सेस दिया था। तो अगर ये भी वो कर सकते हैं कि आप डिक्लासिफाई मत कीजिए, लेकिन नोटेड ऑथर्स को जिन्होंने काम किया, जैसे आपको वो एक्सेस दे दें कि जो सावरकर की फाइलें हैं वो आप देख लें, और उसमें से जो मटेरियल आपको लगता है कि नहीं वो पब्लिक में नहीं आना चाहिए, लेकिन कम से कम वो आया, तो अगर वो अप्रोच अगर आप कर दें उनके पास में, अगर फडणवीस जी को, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, फाइलें पब्लिक आपको वो नहीं लगा देंगे। RTI आपकी एडवाइस पे मैंने जो फॉर्मेट भी था, आई हैड फाइल्ड जब फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर थे, पर उसका भी कुछ अंडर द लॉ यू कैन नॉट गेट एनीथिंग, इनफैक्ट वो नहीं होगा। तो आपको पॉलिटिकल लेवल पे अप्रोच करके फडणवीस जी को बोलना पड़ेगा कि ऐसे करके, और उसमें एक हम आप अगर वो नहीं मानते, दो आपके साथ में 2-3 और रिसर्चर जो हैं बोनाफाइडी जिन्होंने काम किया, आप लोग को एक्सेस दें और आप लोग वो पब्लिक इंटरेस्ट में निकाल दें। दिस हैज टू बी मूव पॉलिटिकली, दैट इज राइट, दैट इज राइट। मतलब आपको मना नहीं कर पाएंगे, और आपका इतना पीछे सपोर्ट सिस्टम है कि अगर आपने कल को ये आप अप्रोच करेंगे, उनके साथ फोटो खींच के फोटो आप लगा दीजिए ट्विटर पे कि आज मैं फडणवीस जी से मिला था, मैंने उनको ये लेटर दिया है कि मेरे को उनके CID के और उनके रिकॉर्ड्स, जैसे मेरा भी इस पर इंटरेस्ट है, ऐसी बात नहीं कि हम लोग भी बहुत हम तो नेताजी को नहीं छोड़ते। मुझे आई एम वेरी कीन टू नो, बिकॉज मैंने ये बात बहुत लोगों से पूछी है। श्रीधर दामले जी शिकागो में, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो वो कि CID ने सुभाष बोस की और सावरकर की बातचीत की रिपोर्टें बनाई होंगी, तो मुझे वो भी देखना, मुझे आज तक को मिली नहीं है करके। बट ऑल द सेम इनके सारे पेपर्स 47 के बाद से लेके जब तक वो जीवित रहे, इनके पास में बहुत सारे कागज होंगे, आई कैन अश्योर यू दैट। और अगर नहीं है तो किसने डिस्ट्रॉय किए, कब डिस्ट्रॉय किए, वो भी अपना पे रिकॉर्ड पे आता है। तो अगर आप उनसे एक्सेस मांगे और जब उनसे मीटिंग करें तो उसकी फोटो लेके ट्विटर में डाल दीजिएगा, ताकि इस पे प्रेशर रहे। पॉलिटिशियन को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, पब्लिक प्रेशर कि मैंने आज उनसे मिला, ये लेटर मैंने उनको दिया है,
उसके बाद देखिए फिर हम And लोग there is देखिए sympathetic government, a government that is sympathetic to गवर्नमेंट this सिंपैथेटिक। cause of the information coming out. So actually, yeah. तो आपके लिए ये थोड़ा ये एक बार आप डाल दो मजा आ advantageous है. जाएगा, बिकॉज उसमें फिर ना बहुत धमाल निकलेगा उसके अंदर से। And फिर you are हमारा in the you are बेस्ट best पर्सन, placed to बिकॉज do this. बिकॉज आपके पास में क्लाउड है, आपको वो लोग पसंद करते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी है सब कुछ सब मामलों में, और आपका थोड़ा सा कि एक्सेस में भी है करके। बट कीप इट पब्लिक, डोंट कीप इट सीक्रेट कि आप प्राइवेटली उनसे मिले, बिकॉज देन दिस पॉलिटिशियंस विल गेट अ वे आउट। आप Correct. उनसे मिलिए, दीजिए, डालिए। जैसे ही कल को आपको कागज आपको हाथ लगे, मान लीजिए आपने आईबी की फाइलें चेक करी, उसमें 50 फाइलें निकली, इसकी एक निकली नीरज जी की, वो हमको भेज दीजिएगा। बिल्कुल लेकिन जब वो पंडोरा बॉक्स खुलता है ना, पंडोरा बॉक्स में तो बहुत कुछ निकलेगा, मुझे इतना पता है। बिल्कुल। I am convinced there are certain things which I will not say publicly, but privately I have known. I am convinced there are papers on Savarkar in Yeah. the intelligence division and No, all there that. has to be. There has to be. There क्योंकि has to be. Yeah. ये लोग सभी को चेस कर रहे थे, Yeah. क्योंकि उस जमाने में आपको 60s के जमाने में, जैसे आजकल हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी, उस जमाने में पंडित जी सिक्योरिटी हुआ करती थी। पंडित जी की सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। वो बैठ के सबकी जासूसियां करते थे बैठ करके ये लोग। तो वो बिल्कुल 100% होगा, बट ये कि इससे पहले कि कागज खराब हो जाए, सड़ जाए, आप इस पे अप्रोच कीजिए। जी, sure. Okay, so I think we have answered the main questions, the main points which we had targeted to, and hopefully जितने सारे misinformation campaign चल रहा था to our viewers, to our audience, hopefully we have been able to address your concerns, your questions. बहुत सारे लोग पहले से ही मैसेज करके रखे थे कि कब तक चलेगा ये मिसइंफॉर्मेशन, अभी तक क्यों इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा है, लोग अभी तक हमारे टेक्स्ट बुक्स क्यों नहीं मॉडिफाई हो रहा है, इसको why is the new information not being reflected in our textbooks. I think that's a long drawn process, it's a long term process, and जितना the pressure of public opinion जितना increase होगा उतना जल्दी होगा, but it takes time. Any change like that is a huge change and it will take some time, but the process has started and people are reading books, new information is coming out, so that's a sign of hope. So do keep up एक बस your एक लास्ट रिक्वेस्ट था, ये आप लोगों ने शुरुआत में बहुत अच्छे कमेंट दिए थे, आप ये जब वीडियो चला, अभी तो चला जाएगा, उसको काट करके वो डाल देना। जैसे डॉक्टर संपत ने जो मेरे को आंसर दिया, मैंने उनसे पूछा था कि सावरकर जी से कैसे उन्होंने बिहेव किया था, तो उसको अलग से काट के मैं वो छोटा 10 बाइट्स मिनट बना का, दूंगा उसका, हाँ वो 10 मिनट का मैं bites सेगमेंट, बना बिकॉज दैट विल वेरी यूजफुल फॉर पीपल, क्योंकि पूरा हाँ। 1.5 घंटे का वीडियो लोग केवल देखते नहीं है, तो कम से कम मैं वो बाइट्स बना दूंगा, हाँ that's a good बाइट्स idea, बना मैं बाइट्स दीजिए। बना दूंगा, बाइट्स बना दूंगा। Okay. So thank you everyone for joining and staying with us, and I will just remind you that we have started the Telegram group to join if you like, and again I will repeat the appeal to you, the request to you for resources. We do need resources, otherwise no campaign can sustain itself, nothing can move forward. So that's for tonight. Thank you again for joining. Thank you, Vikram, thank you so much for joining, Thank you, and Chandra. Thank you. hopefully we will get more opportunities to come together and have more addas like this, more chats like this, Indeed. and our friends in the opposite camp will give us more opportunities to take them to. I'm sure they won't disappoint as ever. So thank you again, thank you everyone for joining. That's all, and see you again soon. Good night. Jai Hind. Good.